Assalamu alaikum. How are you all? I hope you're fine. My name is Quaid Johar, and I will be teaching you performance management. So, let me introduce myself a bit to you people. I'm an ACCA, and I passed my exams back in December 2002. It has been now more than 25 years of passing my exams, and I'm teaching to ACCA people since a long time, since 2002. Plus, I had a very good experience of finance and audit working with Ernst& Young International around 6 years. And till then, I was a part-time teacher. But then, once I resigned from Ernst& Young International in 2006, then I started teaching full-time. So this subject, performance management, this was introduced by ACCA in 2007. First exam sitting of this exam performance management was December 2007. I still remember this. It was a first attempt, first sitting of exam, and we started delivering lectures on this subject, performance management, in July 2007. So obviously, it was the very first attempt of a new paper. So we learned a lot teaching this paper again and again. Then now it has been a long time since when we are teaching this performance management. So I'm teaching at various institutes and many other subjects as well I'm teaching apart from performance management. So the main pillars that I teach is financial reporting and auditing and financial management, right? Now, let's start with the subject. This was a brief introduction of mine. Now, what do this subject involve? थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ कि इस सब्जेक्ट में क्या क्या इंक्लूडेड है. तो ये थोड़ा सा इसमें मैनेजमेंट अकाउंटिंग को याद कीजिएगा कि व्हाट वाज मैनेजमेंट अकाउंटिंग. मैनेजमेंट अकाउंटिंग डील्स विद इंफॉर्मेशन which is provided to the management, the higher management, the middle management, the lower management of company, who then use that information and calculations for planning, decision-making control, and performance measurement. So these are the four functions of management accounting for which the management accountant provides information, calculations, numbers, right? Now, this subject has been divided into 5 sections, right? And these 5 sections are mostly pertaining or belong to these planning, decision-making, control, and performance measurement objectives of management accounting, right? Now, let's see what are the 5 sections. ये 5 sections हैं syllabus में. उसमें A है आपके पास information technology and information systems required by an organization. In this section, you will learn about that how information technology is used by management accountants, and a little bit knowledge has been given regarding how can information technology be used by a management accountant, like how will data analytics will be used, how artificial intelligence will be used in management accounting. Now, specialist cost accounting techniques will be discussed in this syllabus. Then decision making, budgeting and control, and performance measurement control.
अब मोस्टली आपको नजर आ रहा होगा कि डिसीजन मेकिंग, बजटिंग, प्लानिंग हो गया, और फिर परफॉर्मेंस मेजरमेंट कंट्रोल, यही सारे ऊपर आपके पास ये नजर आ रहे हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो ये लिंक हो रहा है मैनेजमेंट अकाउंटिंग के साथ, ये सब्जेक्ट। ठीक है, इसके बाद अब जो मेजर टॉपिक्स इसमें कवर हो रहे हैं सेक्शन वाइज, मेजर टॉपिक्स मैंने कुछ यहाँ पे समराइज किए हैं, राइट। लेट्स लुक एट दोस टॉपिक्स विच वी आर गोइंग टू स्टडी अंडर द हेडिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। सेक्शन ए विल बी लर्निंग managing information, sources of information systems and data analytics, right? Then costing techniques, the main costing techniques which are covered in the subject syllabus. Mostly these costing techniques are alternate costing techniques, the advanced costing techniques. Traditional costing techniques discuss नहीं हुई हैं, जॉब बैच absorption costing वगैरह, ये बेसिक सारी आप लोगों ने मैनेजमेंट अकाउंटिंग में स्टडी कर ली है। Over here we will be studying the advanced costing techniques. Number one, activity based costing, then life cycle costing, target costing, throughput accounting, and environmental accounting. Then the third section, section C, covers decision making. TVP analysis is one of the topics, then relevant costing, pricing decisions, then product mix decisions, make or buy decisions, other decisions like further processing decisions, and decision making under risk and uncertainty conditions. We'll also be learning linear programming under this topic. So the linear programming will be covered in product mix decisions, right? Now, after decision making, section D, this covers budgeting and control, budgeting systems, quantitative analysis, standard costing, mix and yield variance, planning variance, operational variance, and performance analysis using budgeting and control. So this will be covered in this section. Then performance measurement के section में हम लोग पढ़ रहे होंगे profit seeking organizations, performance measurement in profit seeking organizations, then performance measurement in not for profit organization sector, then divisionalization, divisional performance, then transfer pricing and external considerations in performance measurement. So this is a brief overview and a broad view of the topics which we'll be covering in performance management. Now the syllabus is linked that like this, that management accounting करने के लिए, in order to proceed with management accounting, we need to know the costing very well. तो costing में आपको ये information जो मैं बताया आपको, activity based costing, life cycle costing, ये सारी जो advanced costing techniques है वो सिखा रहा है। और costing सही होगी, right, तो automatically जो है performance सही आएगी। यानी सही costing होगी तो selling price सही होगी business की, और business की selling price सही सेट हुई होगी, राइट, तो अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, राइट क्वांटिटी सेल कर सकते हैं, विच रिजल्ट्स इन अ बेटर परफॉर्मेंस, राइट। फिर कॉस्टिंग के लिए ऑब्वियसली इंफॉर्मेशन चाहिए, तो इसको लिंक किससे किया गया है? कॉस्टिंग इज नॉट पॉसिबल विदाउट यूजिंग इंफॉर्मेशन। इफ यू डोंट हैव प्रॉपर इंफॉर्मेशन, द प्रोडक्ट कॉस्ट विल नॉट बी कैलकुलेटेड एक्यूरेटली, द रिजल्ट ऑफ विच विल बी द budgeting decisions, the pricing decisions will not be made correctly, and due to that the business cannot perform well. The performance depends on costing. Then, along with costing, business that plans well will perform well. There are very high chances that the business that performs well due to a good planning and control. Now, obviously, if a business plans well and do not execute that plans, सही से plan को follow नहीं करते, तो how can they get successful? But if a good plan has been made and it has been followed, the business will perform well. So this planning के अंदर हम budgeting और ये सब चीजें देखेंगे, और फिर standard costing, variance analysis देखेंगे। तो planning basically क्या होता है? Resource allocate करना for various purposes, right? But वो resource properly actual में use हुई है नहीं हुई? Budgeting तो हो गई कि इस एरिया में लेबर में इतने आवर्स यूज होंगे, लेकिन फिर एक्चुअल में आवर्स इतने यूज होने भी चाहिए। बजटिंग तो हो गई कि इतने पैसे खर्च होंगे, इतने किलोग्राम, इतने प्राइस का हम 1 किलोग्राम परचेस करेंगे, लेकिन एक्चुअल में उससे ज़्यादा किलोग्राम खर्च नहीं होने चाहिए, प्राइस उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, वरना आपके पास क्या आएगा? डिफरेंस आएगा बजट और एक्चुअल में, और प्रॉफिट उसकी वजह से क्या होंगे? इन्फ्लुएंस होंगे। तो अच्छा भी हो सकता है, प्रॉफिट इंप्रूव भी हो सकते हैं, और प्रॉफिट खराब भी हो सकते हैं। इट डिपेंड्स के बजट वॉज
positively followed or not. Then decision making also plays a very important role in performance, in a better performance. If a organization obtains proper information about the options which are available to a business, and the business selects the best option, which is known as decision making. Choosing between alternatives is decision making. So if the business knows about the options available for a particular activity and selects from those best options, so one of the best of one of the best options will be chosen, right? And what happens, that that results in a good performance, right? So the last thing in the syllabus is performance measurement. So they will teach you how, the syllabus teaches you a performance how performance of a company can be measured, right? In case of a profit-seeking firm, profit-seeking firm is a firm whose target is profits, and the owners are making drawings from that business. Obviously, they will like to earn more profits. How they will measure the profitability, right? And second thing is the second type of organizations, not for profit organizations. So many government organizations, many charities, they are not profit-seeking organizations, but they also need to measure their performance to see whether they are using the resources properly or not, they are growing properly or not, right? They are maximizing their efficiency or not. Now, so in case of not-for-profit organizations, 3 E's are used. 3 E यूज करते हैं, इकोनॉमी, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस. तो उसके थ्रू वो सिखाया जाएगा, राइट? तो अब ये थोड़ा सा मैं आपको सिलेबस के अंदर 5 सेक्शंस हैं, 5 सेक्शन में क्या क्या टॉपिक्स हैं और कैसे आपस में ये 5 सेक्शंस लिंक कर रहे हैं. इंफॉर्मेशन चाहिए होगी इन तीनों कामों के लिए. इसके लिए कॉस्टिंग, प्लानिंग एंड कंट्रोल, डिसीजन मेकिंग के लिए, और फिर बिजनेस जब डिसीजन ले लेगा, प्लानिंग कर लेगा, कॉस्टिंग कर लेगा, ठीक है, तो ईयर एंड पे या मुख्तलिफ ओकेजन्स पे जो है वो परफॉर्मेंस मेजरमेंट होगी. तो परफॉर्मेंस मेजरमेंट कैसे होगी वो सिखाएगा, ठीक है. इसके बाद अब जो है थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं कि सिलेबस के बाद कि एग्जाम पैटर्न क्या है. तो 3 सेक्शंस एग्जाम में आपसे जो है वो पूछे जाएंगे. 3 सेक्शन, द एग्जाम इज 100 मार्क एग्जाम एंड इट विल बी डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस. और सेक्शंस कुछ यूं हैं कि जो फर्स्ट सेक्शन है वो 30 मार्क्स का, और इस सेक्शन में देयर विल बी 15 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस. आपने खुद आंसर कंस्ट्रक्ट नहीं करना, किसी ना किसी तरह से आंसर वहां मौजूद होगा. ज्यादातर एक ब्लैंक आ सकता है आपके पास, जिसमें आपको एक नंबर पंच करना होगा, दैट्स ऑल. बाकी आपको कोई सेंटेंसेस वगैरह नहीं लिखने इस सेक्शन में. और सेक्शन बी में भी आपने सिर्फ क्या करना है, कोई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, मिक्स एंड मैच होंगे, पॉइंटिंग करनी होगी कि ये राइट प्लेस है जहाँ पे फीजिबल रीजन है, ठीक है, ये ब्रेक इवन पॉइंट है, इस तरह पॉइंटर्स आपको बताने होंगे, ठीक है, इस तरह. या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, बेस्ट ऑफ द आंसर्स होगा आपके पास, यानी 4 आंसर्स होंगे, उससे बेस्ट पिक करना होगा यूं. अब सेक्शन ए 15 मार्क्स का होगा और सिलेबस के किसी भी एरिया में से हो सकता है. सेक्शन बी में 3 क्वेश्चन होंगे और हर क्वेश्चन में 5-5 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, यानी वो एक पर्टिकुलर टॉपिक बेस्ड होगा. एक ही टॉपिक पे 4-5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकते हैं, यानी कि आपके एग्जाम में 3 टॉपिक सिलेक्ट हो सकते हैं, 4 टॉपिक सिलेक्ट हो सकते हैं, जिसमें हर टॉपिक पे आपको 3-3 हर टॉपिक पे आपको 5-5 क्वेश्चन दिए जाएंगे. तो एक पूरे चैप्टर पे आप यूँ समझे, जैसे फॉर एग्जांपल प्राइसिंग है तो प्राइसिंग पे 5 क्वेश्चन है. इस तरह का सीवीपी एनालिसिस है, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, उस पर 5 क्वेश्चन आएंगे. या वेरिएंस एनालिसिस है, उस पर 5 क्वेश्चन आएंगे. इस तरह 15 मार्क का पूरे क्वेश्चन बनेगा, राइट. तो इस तरह से 10 मार्क का एक क्वेश्चन बनेगा और टोटल 3 क्वेश्चन होंगे आपके पास. तो 10 मार्क के 3 क्वेश्चन 3 टॉपिक्स पे, विच मेक्स 30 मार्क्स. अगेन इसमें आपने कोई आंसर कंस्ट्रक्ट नहीं करना है, कोई आपने लिखना नहीं है, कुछ ड्राफ्ट नहीं करना है. हाँ, लेकिन सेक्शन सी में आपको आंसर क्या करना होगा, कंस्ट्रक्ट करना होगा. इसलिए उसको हम कहते हैं कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस. 2 क्वेश्चंस होंगे 20-20 मार्क के.
ये क्वेश्चन या तो डिसीजन मेकिंग से होगा इसमें से एक, या फिर बजटिंग से होगा, बजटिंग एंड कंट्रोल से। जैसे डिसीजन मेकिंग के अंदर हमने ये टॉपिक्स पढ़े, तो इनमें से किसी एक टॉपिक में से एक क्वेश्चन आ जाएगा 20 मार्क्स का, या फिर इधर से होगा। ठीक है, और एक क्वेश्चन आपका कहाँ से होगा, परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड एनालिसिस से। तो दो क्वेश्चंस जो आपको आने हैं सेक्शन सी में, वो इनका ताल्लुक इन तीन एरिया से होगा, जो आप ग्रीन, रेड और येलो में देख रहे हैं, राइट। अच्छा, इंफॉर्मेशन सिस्टम में से थोड़ा बहुत आपको डेटा एनालिटिक्स वगैरह में से, या इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग में से, थोड़ा सा सस्टेनेबिलिटी अकाउंटिंग में से वो आपसे थ्योरेटिकल चीजें इसमें पूछ सकते हैं सेक्शन सी के अंदर, राइट। तो ये कुछ एग्जाम से रिलेटेड था कि पेपर कैसे सेट हो रहा है। ठीक है, तो तीन सेक्शंस हैं, और सेक्शन सी में आपके क्वेश्चंस डिसीजन मेकिंग, बजटिंग और परफॉर्मेंस में से दो क्वेश्चंस आएंगे। तो आपको इनकम स्टेटमेंट बनानी पड़ सकती है, कोई कोई कैलकुलेशंस करनी पड़ सकती हैं, लेकिन यू हैव टू मेक द वर्किंग्स ओवर देयर। और फिर थ्योरेटिकल पार्ट्स भी होंगे, नैरेटिव पार्ट्स होंगे, तो आपको वहाँ पे रीजनिंग करनी हो सकती है, एनालिसिस लिखने को आ सकती है, डिस्कशन लिखने को आ सकते हैं। तो यू हैव टू ड्राफ्ट द फुल आंसर ओवर देयर, राइट, पैराग्राफ लिखने पड़ सकते हैं। ये था आपका एग्जाम पैटर्न, सिलेबस हो गया, एग्जाम पैटर्न हो गया। एक और चीज मैं डिस्कस करना चाहूंगा, आज ओरिएंटेशन सेशन है, तो आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर रहा हूँ रिगार्डिंग द परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सब्जेक्ट। एक स्टडी रिसोर्सेज जो अवेलेबल हैं, बहुत सारी स्टडी रिसोर्स अवेलेबल हैं। बीबीपी का स्टडी टेक्स्ट अवेलेबल है, फिर उसके बाद बीबीपी की आपको कैप्लान का स्टडी टेक्स्ट अवेलेबल है, फिर बीबीपी की एग्जाम किट, कैप्लान का एग्जाम किट, फिर आपके पास स्टडी हब अवेलेबल है। तो देयर आर मेनी मेनी आपके पास चॉइसेस इन प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम। आई वुड सजेस्ट कि एक कोई जो है वो बुक ले ली जाए, जैसे फॉर एग्जांपल बीबीपी का स्टडी टेक्स्ट या कैप्लान का स्टडी टेक्स्ट ले लिया जाए, और एग्जाम किट्स दोनों सॉल्व की जाए, ताकि आप प्रॉपर प्रैक्टिस कर सकें। जो कंसेप्चुअल मटेरियल है वो एक बुक से आप देख लें, और बार बार एक ही बुक को पढ़ें, ताकि चीज़ें आपको याद हो जाएं, राइट। बजाय इसके कि दो तीन किताबें पढ़ें और कुछ भी याद ना हो, उससे बेहतर ये है कि हम एक मटेरियल को ही देखें। तो जैसे फॉर एग्जांपल कैप्लान जैसे है, नंबर वन, कैप्लान स्टडी टेक्स्ट, ये हम यूज कर लें, ठीक है, या स्टडी हब यूज करें। स्टडी हब पे जो एसीसी ने जो मटेरियल जो है वो प्रिपेयर किया है वो यूज करें, दैट्स वेरी रेलिवेंट टू द सिलेबस। और फिर उसके अलावा प्रैक्टिस के लिए स्टडी हब पे भी आपके पास क्वेश्चंस हैं, हर चैप्टर पे 5 क्वेश्चंस हैं। इसके अलावा एग्जाम किट कैप्लन की यूज़ करें, हम बीबीबी की एग्जाम किट यूज़ करें, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एग्जामिनर कमेंट जरूर पढ़ें, पास पेपर से जो लोगों ने कॉमन मिस्टेक्स की हैं वो हम पढ़ेंगे, तो अल्टीमेटली हम वो मिस्टेक्स आगे जाके अवॉइड करेंगे, ठीक है ना। इसके अलावा फिर जो है हम आपको जो है लेक्चर्स प्रोवाइड करेंगे ऑन बिहाफ ऑफ KNS, राइट। तो KNS आपको लेक्चर्स प्रोवाइड करेगा जो कि डिटेल में होगा, सारे टॉपिक्स कवर करेगा, ठीक है। वो आपके लिए सब्जेक्ट को ईजी बनाएगा, राइट। और उनमें एग्जाम्पल्स, क्वेश्चन आंसर्स और बहुत सारी टिप्स, एग्जाम टिप्स, सब कुछ उसमें मौजूद होगा, ठीक है ना। सो दिस वाज a brief introduction of performance management, in which we discussed the exam pattern, the topics, the exam resources that are available, एंड विद पैसेज ऑफ टाइम पे जैसे जैसे आप लेक्चर्स लेते जाएंगे, ठीक है, तो उसमें हम आपको मजीद गाइडलाइंस प्रोवाइड करते जाएंगे, टिप्स देते जाएंगे, चीज़ें याद करवाते जाएंगे, ठीक है, रिगार्डिंग द सब्जेक्ट। So thank you very much for attending this exam orientation session today with me, Johar. Inshallah, we will continue with the first lecture in the next class. Allah Hafiz.